So now we are going to unbox this Orbi robust mast home Wi-Fi mesh. This is a tri-band mesh with Wi-Fi 6 system. The model number is AX4200. It's RBK752. It can connect up to 40 plus devices, and it covers up to 4500 square foot of area. So we are going to open this up and set it up today. So let me just open it for you. It comes with one router and one satellite. So let me just open that. आप इसको देखिए तो this comes with a router mesh with a satellite, and let's open this. It comes with 3 simple connection guidelines, and you have to download Orbi app. Now let's take it out. तुम्हारा भी यही है क्या? So this comes with this satellite and with a router. इसमें सारे यूज़र आई डी पासवर्ड वगैरह लिखे हुए हैं, प्लस साथ में इसमें आता है एक केबल एंड 2 पावर कनेक्टर्स. सो हम इसको सेट करेंगे फिर दिखाएंगे. So after setting up this Orbi, you can see CX4200, and now I'll just take you to the speed test right from here. देखते हैं क्या स्पीड आती है. तो पहले जो इसकी स्पीड थी वो कतई खतरनाक 72 Mbps थी. एंड सी देखिए 165 आ रही है. एंड इससे पहले जो राउटर लगा था उसमें स्पीड जो थी 73-74 Mbps आ रही थी. सो दिस इज़ व्हाट द अपलोड स्पीड इज़ 23.2. ये मैं जाता हूँ थोड़े दूसरे एंड पे, यानी कि ऊपर, जहाँ मैं चेक करूँगा कि सैटेलाइट में क्या स्पीड आ रही है. और भी सैटेलाइट के पास, और यहाँ देखते हैं कि स्पीड क्या होगी. वन 83.3. सरप्राइजिंगली यहाँ अपलोड स्पीड ज़्यादा आ रही है मेन राउटर से, पता नहीं कैसे. हम ज़रा जाते हैं घर के बाहर, देखते हैं कितना वहाँ पे है स्पीड. अब हम आ गए घर के बाहर. घर के बाहर देखते हैं. पहले यहाँ पे स्पीड आ ही नहीं रही थी, बट अब चेक करते हैं कि कितनी है. So चेक.
177 Mbps. And 120 Mbps is an upload speed. So ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, Orbi AX4200 जिसने इस पूरे घर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया विद जस्ट ओनली 2 सैटेलाइट्स। दे क्लेम टू हैव अ कवरेज ऑफ 5200 स्क्वायर feet of area, and I think they are right, because this entire house is more than 4000 square feet, and as I've shown you, we've gone outside, tested the speed, and looks perfectly fine. It has actually improved the speed of to more than two times, and yeah, the coverage has improved. Earlier we were not getting all the devices connected, and now we are connected up to more than like 15 devices right now. And the claim from Netgear is that they this particular device or this particular router supports more than 40 plus devices. So I hope this gives you a good idea that which router to take in case if you have a big house and you want to extend the coverage, improve the speed of your Wi-Fi connection. So please subscribe to my channel and let me know if you want to look